the Tuesday edition of This Is Exclusive with me, Sharvin Sen. Ladies and gentlemen, 4 years ago, when Article 370 was abrogated, you've had politicians, mainstream politicians from the valley saying that river of blood would be flowing if 370 is removed. 4 years later, the situation is abundantly clear. The numbers speak, ladies and gentlemen, be it as far as security in the valley is concerned, or for that matter, investments in the valley are concerned. On both counts, Kashmir has done far better than what it was in the past. Tonight, we expose those very politicians who were questioned about Article 370, and the response that came in will only leave you shell-shocked. All this and much more in this edition of This Is Exclusive. But up first, these are the headlines we are tracking for you at this hour. Bhajan Lal Sharma, the new Rajasthan Chief Minister. Diya Kumari and Prem Chand Berwa to take charge as Deputy Chief Ministers in Rajasthan. Bhajan Lal Sharma meets governors, takes claim to form a new government. Questioned on Jammu and Kashmir bill, Farooq Abdullah loses the plot, says Jammu and Kashmir can go to hell. Political face-off over Nehruvian blunders. Rahul hits back at Amit Shah bid to distort history. A day after Supreme Court upheld Article 370 abrogation verdict, Muslim organizations welcome move. Ladies and gentlemen, undoubtedly this was a poll debacle for the Congress party, losing out states from the Hindi heartland. Now, there was politics that was essentially played over who's going to be the Chief Minister of Rajasthan, Madhya Pradesh, as well as Chhattisgarh. As the Congress has been putting it, there has been an inordinate delay, starting with the former Chief Minister of Rajasthan, Ashok Gehlot. And now, of course, you've had leader of the opposition also raising this entire question. But what has essentially happened is that the Bharatiya Janata Party has set the narrative. One, there has been a generational shift. Second, no matter how much the opposition hates it, but many would say that this is also a masterstroke because this leads to a new crop of leaders. For instance, what has happened in the state of Rajasthan. Let's try and dissect this. Let's also admit that no one in the media can ever predict what the Bharatiya Janata Party is going to do when it comes to their chief ministerial candidate. And it was quite evident when you had Bhajan Lal Sharma being named as the Chief Minister of Rajasthan. Helping us understand what does this essentially mean and what is it that the Bharatiya Janata Party is aiming at. Joining me in the studio right now is our senior executive editor Abhishek Kapoor, helping us understand the narrative that has been sent and what does it essentially mean for the opposition parties, which were basically trying to say that, look here, when the Congress does it, then there is a problem with it. You say that there is infighting within the Congress party and there is no problem as far as Bharatiya Janata Party. Abhishek, put this into perspective. 3 new faces. Rajasthan gets a new face, so is the case of Madhya Pradesh as well as Chhattisgarh. Well, they are new because they're new to us, and they were not. They were low profile. They were not very big, visible faces. But then they are key faces insofar as the party is concerned. Shravan, they are all general secretaries of the organization in their respective states. They have had long tenures. In the case of the Chhattisgarh Chief Minister, he has been a member of Parliament for 2 decades. An MLA for a decade, and a union minister as well. Similarly, in the case of the Madhya Pradesh Chief Minister, Dr. Mohan Yadav, he has been with the party going back to the ABVP days in 1980s. So in the case of today's pick for Rajasthan. So I think having said that,
The fact that these are people getting rewarded for having been loyal to the organization for that long speaks something about the party, number one. Number two, I think the BJP has got the caste metrics, the community metrics right going into the 2024 elections. So really taking the caste census gauntlet of the Congress party head on, they have... because they won all the state elections, obviously, so they had those places to fill, and so they got the metrics right. And that's where the courage of the central leadership comes into play, where they have the foresight to really keep the 2024 election in mind and get every community along together. So an OBC chief minister in Madhya Pradesh, a tribal chief minister in Chhattisgarh, an upper caste chief minister in Rajasthan, along with 2 deputy chief ministers from the scheduled caste, 2 deputy chief ministers from the upper caste, and 1 deputy chief minister from from the OBC community. So I think that's the whole philosophy as it comes out of the decisions taken by the party over the last 3 days. Reward loyalists, old-timers getting rewarded with these posts, phasing out of the old generation, getting in new one generation, and then of course getting the community metrics right for 2024. I think, because you asked what the BJP is looking at, obviously now they are looking at maybe 350 plus. Thank you very much, Abhishek, for putting this into perspective. Undoubtedly, there is a narrative that has already been set. We've also got some reactions on this story. Let's play them out. कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कैलाश जी, राजस्थान को नया मुख्यमंत्री मिल चुका है, भजन लाल शर्मा। क्या हल्का भी अनुमान था आपको कि एक ब्राह्मण चेहरे को मुख्यमंत्री बनाएंगे, वो भी पहले बार के विधायक? ऐसा कि हमें ये पक्का विश्वास था कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को ही सीएम बनाएंगे, और जिनका लंबा अनुभव है भजन लाल जी को, उन्होंने संगठन के रूप में उन्होंने कई वर्षों तक काम किया है, और मैं इस समय उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, और साथ ही प्रधानमंत्री जी को और हमारे शीर्ष नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, और बधाई दूंगा कि एक बूथ पर काम करने वाले कार्यकर्ता को जिस तरह से आज ये जिम्मेवारी दी गई है, तो मैं सोचता हूँ कि आने वाले समय के अंदर हम प्रदेश को आगे बढ़ाएं। राजस्थान का जो एक सुनहरा जनता ने भविष्य देखा है भारतीय जनता पार्टी के हाथों में, और निश्चित रूप से केंद्र सरकार की योजना को नीचे तक पहुंचाकर और राजस्थान का विकास हो, इस दिशा के अंदर हम सब मिलकर काम करेंगे। और मैं इस अवसर पर पुनः भजन लाल जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि एक कार्यकर्ता को बहुत बड़ी ये जो जिम्मेवारी मिली है, और इस जिम्मेवारी के ऊपर हम सब मिलकर काम। कैलाश जी, एक और बात सोशल इंजीनियरिंग को लेकर के, ये लगातार कहा जाता है कि बीजेपी सोशल इंजीनियरिंग पे बहुत फोकस रहती है। अगर हम बात करें एक जगह आदिवासी चेहरा, दूसरी जगह ओबीसी चेहरा, और अब ब्राह्मण चेहरा, वो सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला क्या बीजेपी के पक्ष में 2024 में रहने वाला है? उसको ध्यान में रखते हुए सोशल इंजीनियरिंग पर काम कर रही है बीजेपी। ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता को हमेशा जानती है, कार्यकर्ता को आगे प्राथमिकता में रखकर काम करती है, और मुझे लगता है कि आज राजस्थान हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे कार्यकर्ता को अवसर दिया है जो वास्तव में जिन्होंने धरातल की जानकारी है, धरातल पर उन्होंने काम किया है। और भारतीय जनता पार्टी के सामने जाति की अगर बात करते हैं तो सिर्फ 4 जाति है, जिसमें युवा है, महिला है, किसान है या गरीब है। तो ये इनके ऊपर आने वाले समय के अंदर भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, तो निश्चित रूप से जातियों में ना बांट के हमें विकसित भारत बनाता, तो हमें ऐसे इन चारों जो जातियां हैं इनको आगे वर्ग को ऊपर उठाना होगा, तभी हम भारत को आगे बढ़ा सकते हैं। हमारी सोच है, देश है, हमारी सोच जो विपक्षी सोचते हैं वो नहीं है। उन्होंने वर्षों तक तुष्टीकरण की नीति के ऊपर सरकार चलाई, उन्होंने जातियों में बांटने का काम किया, लेकिन हम देश हमारे लिए प्राथमिकता में है। तो ये है कैलाश चौधरी, राजस्थान के नए मुख्यमंत्री। भागीरथ चौधरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। भागीरथ जी, पहली बार के विधायक को मुख्यमंत्री बना दिया, लगातार ये बात उठ रहा है कि बीजेपी सोशल इंजीनियरिंग का जो फॉर्मूला है वो अपना रही है। छत्तीसगढ़ में हमने एक अलग चेहरा देखने को मिला, और अगर मध्य प्रदेश की बात करें ओबीसी चेहरा, और अब राजस्थान में बिल्कुल भजन लाल शर्मा ब्राह्मण चेहरा को मुख्यमंत्री बनाया। ये जो सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला है, ये बीजेपी के लिए किस तरह का रहेगा? देखिए 2024 में देखिए, किसी न किसी माँ के जन्म तो लेना पड़ता है। अब कोई किसी तरह से आकलन करे, किसी एंगल से उसको देखे, परंतु मैं ये कह सकता हूँ भजन लाल जी शर्मा संगठन की दृष्टि से
बार बार प्रदेश के महामंत्री रहे हैं और उनको लंबा अनुभव है। ये जरूर है वो पहले दफ़े विधायक बने हैं, पर तो आपको पता है गुजरात में पहले दफ़े मुख्यमंत्री बना, वो जो विधायक बना वो मुख्यमंत्री बना। मैं कह सकता हूँ कि ये चयन बहुत बढ़िया चयन है। भजन लाल जी शर्मा का सीएम बनना ये प्रदेश के लिए, मैं कह रहा हूँ, सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास और सबके प्रयास के मूल मंत्र के आधार पर जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने, गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो निर्णय लिया है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने ये बहुत सटीक लिया, सही लिया। और जो मुख्यमंत्री बने, जो सांसद दिया कुमारी जी थी जो अभी विधायक बनी है, और एक प्रेमचंद बेरवा जो मेरे अजमेर संसदीय क्षेत्र में दूदू विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, और अजमेर उत्तर से जो स्पीकर बने हैं विधानसभा अध्यक्ष वो भी मेरे संसदीय क्षेत्र। मुझे तो बिल्कुल भी अनुमान था हल्का सा भी कि भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। इतने सारे नाम दौड़ रहे थे, लेकिन भजन लाल शर्मा मेरे को तो था। मैंने 5 दिन पहले ही उनको फोन पे कहा था कि भजन लाल जी भाई साहब आप मुख्यमंत्री बन सकते हैं। उन्होंने कहा भाई साहब ये हो सकता है क्या? मैं क्या होने वाला है, और ठाकुर जी ने सुन लिया और उनको मुख्यमंत्री बना दिया। तो ये है बीजेपी सांसद भागीरथ चौधरी भजन लाल शर्मा के मुख्यमंत्री बनने पर। हर्षद चंदवानी फॉर Mainstream politicians in the valley were largely hoping that the decision coming in from the Supreme Court would be very different. They were selling this dream of Article 370 being brought back. But yesterday, the Supreme Court has sealed the fate. Article 370 is history now. But that hasn't really gone down well with the Kashmiri politicians. For instance, take a look at what happened when Farooq Abdullah, who represents Srinagar, says, Jahannam mein jao, the moment he was asked this question about Article 370. He was also thereafter questioned by my colleague Harsha at the Parliament. Listen it to what Farooq Abdullah had to say. कल वादा किया था, फरमाइए आने के बाद क्या कहना है, किस बारे में? वही जम्मू कश्मीर जहन्नम में जाए, और क्या जम्मू ले गए वहीं ले गए आप लोग, क्यों कर दिया? लोगों के दिल जीतने हैं, कैसे जीतोगे लोगों के दिल? जब ऐसे वैसे चीजें करो जिससे लोग आपसे और भी दूर जाए। हमारे साथ जम्मू कश्मीर के We are joined by Farooq Abdullah right now from National Conference. Farooq sir, we saw your statement while you were going. You said that Jammu Kashmir made to hell. You compared Jammu Kashmir to Jahannam. What was in context? So in what context did you say that? It was in the context of what you have driven it to. जहन्नम मैंने नहीं बनाया, जहन्नम किसने बनाया? यूटी किसने बनाई? बताइए, एक स्टेट है, आपके यहाँ इलेक्शन हो सकता है, हमारे यहाँ क्यों नहीं इलेक्शन हो सकता? क्या वजह है? क्या हम लोग देश के वासी नहीं हैं? हमने लड़ा नहीं भारत के लिए? कौन खड़ा था 96 में जब हमने इलेक्शन लड़ा? कोई तैयार नहीं था, डर था, बंदूकें चल रही थी, रॉकेट चल रहे थे, हम खड़े हो गए। क्या वो भूल गए? और जिसने ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया है वो देश को जोड़ने की बात नहीं कर रहा है, वो देश को तोड़ने की बात। फारूक साहब, क्या आपने तैश में वो स्टेटमेंट बोला, या आप परेशान हो गए कि कल से जो बयान लगातार आ रहे हैं जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल को लेकर? क्या मोमेंट था जिस मोमेंट में आपने जहन्नम बोला? मैं आपसे कहूँ ना, जब दिल ही टूट गया, जिस उम्मीद पे हम खड़े थे कि उच्च न्यायालय कहेगा इनसे कि जल्दी इलेक्शन करो, हम जानते थे कि 370 ये नहीं मानेंगे और कहेंगे कि साहब यूटी को चेंज करो, स्टेट छूट लाओ, इलेक्शन कराओ। उन्होंने भी छूट दी थी। लेकिन जन्नत को जहन्नम कहना फारूक साहब, बहुत क्रिटिसाइज हो रहा है आपका ये बयान। आप कहूँ ना, हमारे दुश्मन वही चीज़ पकड़ेंगे जिसमें वो समझते हैं कि वो आगे बढ़ेंगे। इनसे कभी आगे नहीं बढ़ेंगे, इनसे दिल नहीं जीता जाएगा। अगर जहन्नम को जन्नत बनाना है तो लोगों के दिलों को समझने की कोशिश कीजिए।
तो ये है फारूक अब्दुल्ला अपने दिए गए बयान पर, जिसमें फारूक अब्दुल्ला ने साफ तौर पर कहा कि दरार डालने की कोशिश की जा रही है। वो स्टेटमेंट तैश में दिया हुआ स्टेटमेंट था। वीडियो हर्षद सुनवानी फॉर रिपब्लिक टीवी।